Whenever people discuss India, they talk about the medieval history of India. The ancient history is forgotten. Today in Delhi, we see all kinds of roads. And till recently, there was Aurangzeb Road as well. But there is no Harshavardhan Road. There is no Chandragupta Maurya Road. Why? There is no Samudragupta Road. There is no Mahaji Shinde Road. Why? यहाँ गुड़गांव में रहने वाला एक 7वीं कक्षा का बच्चा, he was the youngest person to depose before a parliamentary standing committee. And he said that we have been fed to learn about Akbar and Aurangzeb in so many paragraphs. And about Rana Pratap, there are just 4 lines, and Chhatrapati Shivaji, just 5 lines. History requires to be revisited. And in the history, you will come across several such examples where history has been revisited. This revisiting, reassessment, re-evaluation is a part of our scholarship in a way. इन लोगों को पता नहीं कि ये सनातन का मतलब ही शाश्वत है. The literal meaning of Sanatan is eternal. तो सनातन कोई केवल एक उपासना पद्धति का नाम थोड़ा ही है. Whatever is eternal in this world, it's Sanatan. No part of Indian culture is divisive. वी आर ऑलवेज इंटीग्रेशनिस्ट. नैरेटिव चलाने वाले जितने सारे सोशल मीडिया है, वो भी तो एक दृष्टि से अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में है. आज वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस पद्धति से भारत की एक छवि बनाते हैं और जो वास्तविकता है, इसमें बहुत अंतर है. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Thank you for liking or subscribing to the channel and for sharing with those who you think will benefit from these conversations. Today our conversation is about soft power. Does India exercise its soft power? Does India do enough to spread awareness about its heritage, about its culture? How does it benefit a country? It helps in building consensus about Indian political values, foreign policy and culture. Usually developed countries are able to exercise their hard power and soft power. For developing countries, it's all the more difficult to get the conversation going. And India fares pretty low in the influence it has globally. To understand this more, we have with us Dr. Vinay Sahasrabuddhe. He's been a member of parliament and is considered one of the foremost intellectuals of the BJP. But today the conversation is going to be more about soft power and whether India exercises it enough or not, rather than about BJP and her politics. Dr. Sahasrabuddhe, thank you so much for coming to the podcast. I'd like to begin with a topic which many people don't understand, which is soft power. Because you are from the BJP, a number of people will think कि BJP के बारे में पूछते हैं elections, कहाँ जीतेंगे, कहाँ हारेंगे, क्या होगा. लेकिन मैं सिर्फ सॉफ्ट पावर पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों के ओपिनियंस बड़े हैं, लेकिन इट्स कंफ्यूजिंग कि सॉफ्ट पावर आखिर होता क्या है और इसको कैसे एक्सरसाइज किया जाता है और क्यों करना चाहिए. तो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड हमें बता दीजिए. सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने इस बहुचर्चित पॉडकास्ट पर हमें निमंत्रित किया. इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड टू बी रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस. And the subject that you have chosen to start with, which is about soft power, is also very, very important, because post-Cold War, as I understand, as a student of international relations, दुनिया का जो मानचित्र बदला है उसमें जोग्राफिकल स्पेस ऑक्युपाई करने से भी माइंड स्पेस ऑक्युपाई करने को ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है. और इसलिए एक कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के डायरेक्टर थे, बड़े मशहूर शिक्षाविद एक दृष्टि से, Joseph Ney. He had written a book on soft power, which was the first kind of a seminal work on the concept of soft power. And that was about 20 years before, in 2004, the book came. And a little before that, the discussion around soft power also got around. I mean, it started. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट पावर की कंसेप्ट आने के बाद ही सॉफ्ट पावर है. ऐसा तो नहीं है. दुनिया में सॉफ्ट पावर थी. जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि भारत कहाँ है, ये खोजने के लिए पहले कोलंबस और बाद में वास्को डी गामा निकल पड़े. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि भारत से जो स्पाइसेस का सप्लाई होता था वो उस युद्ध के कारण समाप्त हुआ था. उसमें रोड़े अटकने लगे. तो उनको लगा कि लेट अस गो, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस लोकेट वेयर इंडिया इज़. और इस भूमिका से, इस उद्देश्य से दोनों निकले.
अभी स्पाइसेस क्या है? इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर, क्योंकि भारत पहचानने से भी पहले लोगों ने हमारे स्पाइसेस की खुशबू को पहचान लिया था, उससे वो मोहित हुए थे। ये वास्तविकता है। इसी तरीके से हमारे रामायण महाभारत, भारतीय लोग शायद बाद में पहुंचे होंगे, मगर सुदूर जापान तक एक दृष्टि से, और ये सारा मलेशिया, इंडोनेशिया, सारा ही कोरिया है, यहाँ तक रामायण महाभारत पहुंचे थे। तो इसका मतलब यह है कि सॉफ्ट पावर इज बेसिकली अबाउट, I mean, I am not going into the dictionary meaning of the term soft power or the definition of soft power, which is not required, because in a way it is very understandable कि हमारा जो मन मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, जो नॉन कोअर्सिव होता है, जिसमें मिलिट्री का कोई संबंध नहीं है, न कि आर्थिक संप्रभुता का, मतलब आर्थिक ताकत का कोई संबंध है, मगर आपकी संस्कृति के माध्यम से, आपके संगीत, आपके नाटक, आपके महाकाव्य, आपकी जायकेदार मसालों की, या कुल मिलाकर आपकी कुलिनरी और क्यूजीन ट्रेडिशंस की खुशबू, आपका आर्किटेक्चर, आपका सिद्धांत, आपके तत्वज्ञान, आपकी फिलॉसफी, इन सब का जो परिणाम है, दैट क्रिएट्स सॉफ्ट पावर, एंड दैट हेल्प्स यू मेक योर कंट्री, योर सिविलाइजेशन, योर कल्चर understand the global community in a much better way. And there are no boundaries of political and geographical or physical boundaries for the soft power to reach a destination. Not at all. And I'll cite an example, and I'm sure many of the viewers and maybe yourself as well must have visited Beijing. When I first visited Beijing, I realized that perhaps I'm in a Mandarin America. In the sense, except for the language, everything is Americanized. You come across the same Kentucky Fried Chicken and McDonald's and whatnot. Similarly, if I may take the other example, which is that of Israel. When I went to Tel Aviv, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हिब्रू अमेरिका में हूँ। भारत में यह अनुभव नहीं आता, और विश्व के कई ऐसे देश हैं जो अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी, अपने परिचय को बरकरार रखे हुए हैं, यहाँ तक कि अपनी लैंग्वेज को भी। चाइना ने, इजराइल ने लैंग्वेज को तो बरकरार रखा, मगर बाकी कलेवर आप देखेंगे तो एक अमेरिकनाइजेशन की जो एक बड़ी लहर आई हुई है पूरे विश्व में, उस लहर का वो हिस्सा बनते हमें दिखाई देते हैं। तो अपनी पहचान को बरकरार रखना, ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से देखें तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है। अभी चाइना और अमेरिका में क्या, मतलब पॉलिटिकल तो राइवलरी है एक दृष्टि से, बावजूद इसके अमेरिका का प्रभाव चाइना में है, और शायद चाइना का भी कुछ मात्रा में अपने तो क्या अट्रैक्शन था अमेरिकन सॉफ्ट पावर का कि बिना मिलिट्री पावर या बिना हार्ड पावर एक्सरसाइज किए उनका सॉफ्ट पावर इतना अट्रैक्टिव है कि बहुत सारे देशों में वो सॉफ्ट पावर एब्जॉर्ब हो गया इन द लोकल कल्चर? बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मार्ट मार्केटिंग टैक्टिक्स इन अ वे। संपन्न देश है तो एग्रेसिव मार्केटिंग करना, अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाना, उनको फैशन का हिस्सा बनाना। और आज हम देखेंगे तो नैरेटिव चलाने वाले जितने सारे सोशल मीडिया है, वो भी तो एक दृष्टि से अमेरिकन कंपनीज़ के कंट्रोल में है। तो वो एल्गोरिदम्स वगैरह की जहाँ तक बात आती है, वो भी एक था, मगर उससे पहले से भी है। ये तो मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा हूँ। हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, बिल्कुल, हाँ, जो हमारी जनरेशन सब जो जिस पे पले थे, बड़े थे, सो दैट वाज दैट एस्पिरेशनल इंडिया और एस्पिरेशनल यूरोप और व्हाटएवर वांटेड कि वो डिज्नी की टी शर्ट्स पहने या फिर वो वहाँ के एक्टर्स की तरह लुक वॉक। इन अ वे पीपल काइंड ऑफ इक्वेटेड द आइडिया ऑफ प्रोस्पेरिटी विद द आइडिया ऑफ अमेरिका। जी, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आ गया। वो सही गलत ये एक बात अलग है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का संबंध केवल आर्थिक संपन्नता से नहीं जोड़ना चाहिए। एक लाइफस्टाइल, हाँ, एक लाइफस्टाइल है, बहुत साधन सुविधा है, एक दृष्टि से ईज ऑफ लाइफ भी है कुछ मात्रा में, तो उसका एक आकर्षण बन गया। और मतलब लोगों को वो अमेरिका नाम का जो एक मन पर परिणाम निकल कर आया, हम देखते हैं कि कई पीढ़ियां एक दृष्टि से उस प्रभाव से
निकल पड़ी और आज भी वो बहुत ज़्यादा बाहर आई है, ऐसा शायद हम नहीं कह सकते। तो सॉफ्ट पावर जो है उसका इन्फ्लुएंस क्या क्या होता है? मतलब कि फॉरेन पॉलिसी पे होता है, डोमेस्टिक पॉलिसी पे होता है, किन चीज़ों पर सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? आई थिंक इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि जब लोग एक देश को, एक समाज को, उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को जानते हैं और उसमें कुछ आकर्षकता हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप में एक अपनत्व भी बन जाता है। अभी मैं अगर भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ के बिग फैट वेडिंग्स जिसकी बहुत चर्चा होती है, आज मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में जितने सारे वेडिंग्स होते हैं, अमीरों के होते हैं, उसमें हमारे राजस्थान के कलाकार, चाहे वो कालिया बेली वाला वो डांस है वो करने वाले होंगे, या लोक कला, लोक कथा, लोक नृत्य कहने वाले, लोक वादक है, इनको बुलाया जाता है। और इन लोगों ने, यू मे नॉट बिलीव, इन्होंने फ्रांस में अपने बंगले बनाए हैं हमारे राजस्थान के लोक कलाकारों ने। व्हाई नॉट? हाँ, तो ये प्रभाव है। तो बिफोर इवन इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड एनीथिंग रीच्ड आउट देयर, our kalakars, our artists, our artisans for that matter, have already reached there. आप फ्रांस की बात कर रहे हैं, मैं एक प्यू रिसर्च कोट करती हूँ। उसके मुताबिक 68% इंडियन अडल्ट्स बिलीव दैट इंडियन इन्फ्लुएंस हैज़ रिजन इन द वर्ल्ड, बट ओनली अ मीडियन ऑफ 28% adults across 19 other countries in the world think so. So Indians think that we are doing very well in projecting our soft power, लेकिन काफ़ी सारे मुल्कों में, 19 कंट्रीज़ में, people don't believe it. For example, 70% of adults surveyed in France, India's closest strategic partner in Europe, expressed positive views of India in 2008. But in only 39% of French adults have the same positive views in 2023, a drop of 31 percentage points in 15 years. लेकिन आप कह रहे हैं that there is an increase. Maybe it is not reflected in this, but there seems to be a perception that India is not doing enough for its image. I'll explain. This is a wonderful question, and I must respond to it because it will also help me explain as to what exactly are we lacking and where do we lag behind. देखिए, सॉफ्ट पावर का मतलब केवल आकर्षण नहीं है। भारत के प्रति आकर्षण तो बेहद है। मैं कहूँगा कि जो जो भारत में आता है ना, भारत के साथ एक मोहब्बत हो जाती है। दे फॉल इन लव अनमिस्टेकेबली विथ इंडिया, द कलरफुल कल्चर ओवर हियर, the apparels that we use, our festivals, even our culinary cuisine traditions. Name a particular thing and it has attracted people from all over the world. But attraction is one thing and understanding is different. तो हमें चाहिए कि हमारे प्रति जो आकर्षण है उसको हमें हमारे भारत की संकल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया के आकलन में तब्दील करना चाहिए. Unless and until you convert this attraction, this goodwill that India enjoys into a proper understanding of what India is all about, we cannot say that the soft power has been accrued to our account. ये वास्तविकता है. और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, but there is certainly some role played by the media and the academia. Okay. आज वॉशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस पद्धति से भारत की एक छवि बनाते हैं और जो वास्तविकता है, इसमें बहुत अंतर है. और ये आज का नहीं है. 20 years before, let me tell you, there was a seminar and Sushant Gunatilake, one of the very renowned social scientists from Sri Lanka, has mentioned it, that in South California University, there was a seminar. And you know what was the subject of the seminar? Bride burning and son preference traditions in India. Can you imagine? इस पद्धति से हमारी संस्कृति को बहुत ही बेहुदा तरीके से और बहुत ही अभद्र तरीके से अगर प्रस्तुत करने वाला एक एकेडमिया है, और विशेष रूप में अमेरिका में या यूके में या यूरोप में है, तो हमें तो मतलब दुगुनी ताकत से इसको डिमोलिश करने के लिए काम करना पड़ेगा. But there was, I mean, the point is that है ना हमारे देश में. No, but this was never a part of our tradition. No, it was. How can you? How can you describe it that it is a part of our tradition? And tell me, son preference, I mean preference for a male child, ये दुनिया में कहीं कहाँ नहीं है, मुझे बताइए. सब जगह है.
ब्राइड बर्निंग, ये कोई ऐसा थोड़ा ही है कि देखो ब्राइड, जैसे ब्राइड आ जाती है तो उसको बर्न करते हैं. आर यू टेलिंग अस लाइक दैट? मतलब दिस इज द हाइट ऑफ परवर्शन. और इसको तो मतलब हमने बहुत कड़ाई से इसको ध्वस्त करने की जरूरत है. दुर्भाग्यवश हमसे वो हुआ नहीं, और आज हम कर रहे हैं इसको. और It is जैसे true. कि आज भी अगर हम देखें तो the headlines which come out is or till 10 years ago it was rape capital of the world. Correct. Now it is obesity capital of the world, diabetes capital of the world. मतलब these are terms which are attached and crime, pollution. These are things which get attached to the name India. But there's more to India is what you're saying. एब्सोल्युटली. और अगर आप जनसंख्या के अनुपात में यहाँ के क्राइम और बाकी सारी गलत बातों का अगर रेशो देखेंगे, तो बाकी सारे जिनको जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं उनसे तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं. इतनी सारी मतलब आबादी होने के बावजूद भी ये देश बहुत अच्छे तरीके से चलने की कोशिश होती रहती है, और कमोबेश वो सफल होती रहती है. इसको तो विश्व के मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लोग भी बड़ा मतलब बड़े अचंभित हो जाते हैं और बड़ी सराहना भी करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिस्टम्स चरमराई गई है, चलता ही नहीं कुछ. ऐसा होता तो वो गीत शायद वो गाता नहीं था कवि की, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी. तो वो तो है ना, हमारी जिजीविषा है, हमारी संघर्षशीलता है. आई वॉज देयर इन जर्मनी सम टाइम बैक, मे बी सम 5-7 years बिफोर. तो वहाँ का एक छात्र जो भारत में आया था, he was telling me that originally I had come only for 3 weeks, but later on I extended my stay for about 2 months. Then I asked him about his impressions, and he was all negative about the impressions. I mean, people breaking the traffic signals, and then so many people at one time on the streets, and the litter everywhere, all kinds of things that you can imagine, he was telling me. तो मैंने पूछा कि इतनी नेगेटिव कल्पना है आपके मन में भारत के बारे में, तो फिर भी आपने अपना स्टे एक्सटेंड क्यों किया? तो विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस ही सेड कि सर, इफ़ यू मूव अराउंड यूरोप, आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ के लोगों की आंखों में कोई रोशनी नहीं है. भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के आंख में एक आशा की किरण है, एक रोशनी है, एंड दैट इज इंडिया. तो ये जो हमारे समाज की ताकत है, अंतर्निहित है, इनहेरेंट टू आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी, दैट हैज़ केप्ट अस मूव फॉरवर्ड. इसको हमें समझाना पड़ेगा. ये अपरेंटली समझ में नहीं आएगी. Is that something to be appreciated, that there is hope simply because the his daily life is such drudgery of the poor person on the streets? The only way to survive is through hope. I don't know whether it is a positive आप देख रहे हैं, और वो करे भी क्या? अगर होप नहीं है तो वो सर्वाइव कैसे करे? नो, बट ऐसी स्थिति विश्व के कई समुदायों में है, मगर वहाँ होप नहीं है. यहाँ होप इसलिए है क्योंकि यहाँ श्रद्धा है. यहाँ जो मंगल है, जो अच्छा है, जो शुभ है, उसके प्रति एक श्रद्धा है. देखिए, ये देश जीवंत रहा है, चलता रहा है. यहाँ की सिविलाइजेशन सदियों से, सहस्राब्दियों से चलती रही है, तो इसका कारण श्रद्धा है. आई एम श्योर पीपल हैव रेड अबाउट Mark Tully's book, No Full Stops in India. And there he has very beautifully mentioned this, that the Western elite and their counterparts in India generally try to, I mean, I'm telling the substance Sure. of what he had said. I'm not quoting him per se, but he has beautifully said that the Western elite and their counterparts in India try to rush to draw the conclusion. And instead of raising the consciousness of the common people and taking it to higher and higher level, they try to draw conclusion, put a full stop in a land where there are no full stops. Right. So let's come to the aspect which you were talking about, Shraddha, culture, all these things. Vasudhaiva Kutumbakam. Now, that is a key feature of Indian superpower. It was also mentioned by the Prime Minister recently in G20. Explain that term and how that term was used during G20 and how it is used in Indian foreign policy. See, in a way, when we decided to have that motto, Vasudhaiva Kutumbakam, in English it was loosely translated as one earth, one family, one future. And very rightly so. I mean, nobody can deny it, although there were, I am told, some countries had some reservations about the motto itself.
but then nobody could voice their opposition because how can you disagree with the fact which has been stated over there? That is as simple as that. तो इसका मतलब ये है कि ये विश्व समुदाय को एक एहसास दिलाने की बात थी कि वी कैन नॉट लुक एट द ग्लोबल कम्युनिटी इन ए डिसजॉइंटेड मैनर. किसी भी देश में कुछ भी होता है तो उसका पूरे विश्व समुदाय पर परिणाम हो रहा है, चाहे यूक्रेन और रूस के संघर्ष की बात करें या अभी जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है उसकी बात करें. तो इसका उसी पे मैं पूछना चाहती थी कि इन सच अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड टुडे, वेदर इट इज यूक्रेन और वेदर इट इज इजराइल हमास, वहां पे कहाँ आप यूनिटी देखते हैं? नो, दैट इज आवर प्रिस्क्रिप्शन मैम. ओके, ये हमारी धारणा है कि इस भाव से ही काम करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर गो एब्सोल्युटली, unless and until we realize deep down in our minds and in our thinking that we are one world, we are one family because we have one common future. अगर इस भाव से हम नहीं काम करेंगे तो हम सभी का जो एक समुत्कर्ष होना चाहिए, जो एक अभ्युदय होना चाहिए, उससे हम मीलों दूर ही रहेंगे. बिकॉज मोस्ट कंट्रीज थिंक लाइक दैट, नो, मी एंड माइन, मैं, मेरा क्या. इंडिया नेवर. देखो, मैं अभी हमने यूनाइटेड नेशंस में इसी थीम पर एक कॉन्फ्रेंस की सम मंथ बिफोर, तो उस कॉन्फ्रेंस का भी यही थीम था और उसमें हमने कहा, जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल्स आफ्टर एग्जांपल्स, बट व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल पीस कीपिंग, यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस है, उसमें सबसे तगड़ी, सबसे जिसको मैं कहूँगा कि सब्सटैंशियल ऐसी अगर किस देश की कामगिरी है, किस देश का अगर उसमें योगदान है, तो वो भारत का है. कहीं भी उधर लीबिया में या अन्य मध्य पूर्व के देशों में जब जब संघर्ष हुआ, लोग अटक पड़े, तो अमेरिका ने भी हमारे लोगों को कहा, भारत सरकार को, सुषमा जी हमारी मंत्री थी उस समय, कि क्या आपने लोगों के साथ हमारे लोगों को भी रेस्क्यू कर सकते हो? और हमने किया. सी, इंडिया हैज बिकम ए ब्रांड ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एंड नॉट फॉर नो रीजन. टेक द एग्जांपल ऑफ COP27. भारत सरकार ने ये भूमिका ली कि बड़े जो अमीर देश है वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए और उसकी भरपाई करने का काम आप डेवलपिंग कंट्रीज पर छोड़ दे. ये नहीं चलेगा. वी आर स्मॉल कंट्रीज, परहैप्स वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, नो मैटर, बट देन यू कैन नॉट जस्ट पुट द ओनस ऑन अस एंड यू डू एनीथिंग इररिस्पॉन्सिबली, विच इज वाई द प्राइम मिनिस्टर mooted the idea of lifestyle for environment. क्योंकि इनकी जीवन शैली जो है हमारे सो कॉल्ड अमीर विकसित देशों की, वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही है. ओवर कंजम्पशन. बिल्कुल. तो ये बात तो हम ही ने तो कही ना. तो हमें चूंकि पूरे विश्व समुदाय को एक परिवार मानते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म. विश्व में अमेरिका जैसा एक मॉडल है, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म. दूसरा एक पुराना सोशलिस्ट मॉडल है, एक्सट्रीम कम्युनिटी ओरिएंटेशन या कलेक्टिविज्म. हमने उसका बीच का रास्ता अपनाया है. वी अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल. हमारे शास्त्रों ने कहा है, प्राप्ते तु षोडश वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत. व्हेन अ बॉय और अ गर्ल अटेन्स द एज ऑफ 16, द पेरेंट शुड ट्रीट हिम और हर नॉट एज सन एंड डॉटर बट एज अ फ्रेंड. दिस इज आवर way of approaching towards individual identity, individual space, privacy, individual choice. But you cannot stretch it too far. After all, we are a part of a whole. हम एक परिवार के अंदर रह रहे हैं, इसका तो एहसास रखना ही पड़ेगा. तो ये जो भारतीय संस्कृति की जो एक सैद्धांतिक नींव है, आवर फाउंडेशनल वैल्यूज. मैं पार्लियामेंट में था और लोग जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनको पता है कि वहाँ पर स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती. दैट इज़ द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी. आज जो भी विश्व में चल रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ, आइडिया ऑफ सुप्रीमसी, हमने कभी उसको प्रश्रय नहीं दिया. वी सेड एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, विच इज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी. बट देन दिस आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी विल हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल. What does the term spiritual democracy mean? Spiritual democracy means, like in democracy, every other individual is equal. So in spiritual democracy, every way of worship has an equal standing. There is no monopoly, there is absolutely no hegemony. We never say that my way or highway. हमने कभी ऐसा नहीं कहा. हमने कभी नहीं कहा कि हमारे रास्ते से जाएंगे
वही ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे, बाकी है वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे, बिकॉज दे आर इनवैलिड। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने तो कंकर में शंकर देखा है, जैसे अटल जी ने बहुत अपने प्रसिद्ध वाक्य में कहा था। तो ये जो धारणाएं है, ये जो श्रद्धा है, इसके कारण हम वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने के अधिकारी बन जाते हैं, बिकॉज वी हैव लिव्ड दिस फिलॉसफी। I'm going to come to the part of, spiritual democracy again. But before that, what we were talking about, the image of India abroad. So some of us who've got friends and cousins who went in the 70s, he went in the 80s, and they used to always be embarrassed about when people would say, अच्छा तुम यहाँ पे आए हो रहने के लिए, हाँ तुम्हारे कंट्री में गरीबी इतनी है, you come from an underdeveloped nation. Today the same NRIs turn around and feel proud that India has achieved so much, whether it is Chandrayaan, whether it is any other sphere. I don't even want to start listing the achievements, but there is a sense of pride. There are also many Indians who want to come back and be part of the India story. Now, is that solely because India has become economically a strong nation, or is it a combination of that and India's soft power? It is a combination, beyond doubt, because the way we have asserted under the leadership of Prime Minister Modi, whether it is paying our neighboring country, Pakistan, for example, in their own coins, teaching them a lesson, not allowing them to just do any mischief with us and get away with it. ये जो हमने किया है, एक दृष्टि से हमने पराक्रम का परिचय दिया है। चांद्रयान वगैरह सारे विषयों को अगर मैं देखूं तो हमने प्रतिभा का भी परिचय दिया है। तो पराक्रम है, प्रतिभा है, हमारे परिश्रम भी है। पूरे कोरोना काल में हमने क्या देखा? परिश्रम ही तो देखे। हमने जिस पद्धति से वैक्सीन मैत्री स्थापित की है, क्या इस पर किसी को नाज नहीं होना चाहिए? तो इसके कारण हमारे एनआरआई बंधु, हमारी बहनें अब गर्व का अनुभव कर रही है। तो जब नेतृत्व इस पद्धति से अनअपोलोजेटिकली, और ये इसमें कोई नया नहीं है, ये तो हमने करना ही चाहिए था। पीएम साहब ने एक बार जापान में जाते हुए कहा था कि मैंने वहाँ के राजा साहब को भगवद गीता की एक प्रति दी, और वहीं जापान में भाषण कर रहे थे। तो मुझे पता नहीं भारत में अब लोग मेरे ऊपर आलोचना करेंगे या क्या करेंगे, बिकॉज दैट हैड बिकम अनफॉर्चुनेटली आवर नेशनल हैबिट टू डिनाई आवर पास्ट, टू डिनाई आवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। ये जो निगेटिविज्म था, कोई जरूरत नहीं, अरे हम है ना भाई, क्या आपत्ति क्या है? हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी है। अभी ये सनातन धर्म के ऊपर इतना सारा कर रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं कि ये सनातन का मतलब ही शाश्वत है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सनातन इज इटर्नल। तो सनातन कोई केवल एक उपासना पद्धति का नाम थोड़ा ही है। वॉट एवर इज इटर्नल इन दिस वर्ल्ड, इट्स सनातन। मगर वोट बैंक की राजनीति में करने लगे जैसे जो मन चाहे। Because the idea is that the BJP with its idea of Sanatan and with its idea of spiritual democracy is trying to bring about a Hindu Rashtra in this country. Now this is the narrative which one gets to read in the foreign media. Where does the foreign media pick it up? It picks it up from parts of the Indian media and the Indian academia also, जो ये बात start करते हैं, जो बात बोलते हैं, और वो foreign media pick करती है। तो कहाँ पे, where is the falsification in all this? We have not been able to communicate what we are. I mean, I will certainly start by looking into the mirror and turning the searchlight inward in a way. But at the same time, not all the misperceptions are a creation of our own inertia. Some of the misperceptions are wantonly generated by people who are interested in a way tarnishing the image of India and bringing a bad name to the idea of India. And there are many. There are many. अभी कई म्यूजियम्स में देखता रहा हूँ, मैं जाता हूँ, तो एक म्यूजियम में मैंने देखा कि इंडिया इज द होम ऑफ सेवरल वेज ऑफ वर्शिप, एंड देयर आर टू प्रोमिनेंट स्ट्रीम्स, वन इज हिंदुइज्म एंड द अदर वन इज ब्राह्मणिज्म. What kind of canard are you spreading? And who is to contest this, if not we? How can you call Brahmanism a That is what I am saying. मगर ये कनार्ड फैलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी विविधता को विभाजन का आधार बनाने की कोशिशें हो रही है. एंड वी हैव बीन सेइंग कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, दैट इज जस्ट
And let me repeat, that is just the diverse manifestation of our innate unity. We are first united, and then that unity gets manifested in diverse way, which is why it is not just unity in diversity, but unity of diversity. ये हम समझाने में जितने सफल होने चाहिए शायद नहीं हो पाए. पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण हो सकता है, कई बार विभाजन के आधार पर वोट बैंक को बनाने की जो कोशिशें होती है उसके कारण हो सकता है. तरह तरह के कारण हो सकते हैं. तो कुछ डेलिबरेट और कुछ इनर्शिया. बिल्कुल, कुछ डेलिबरेट, कुछ इग्नोरेंस मैं कहूँगा. हमारी पार्ट पर इनर्शिया का भी एक हिस्सा उसमें है, जरूर है. तो ये अगर हम ठीक करते हैं और थोड़ा असर्ट करते हुए एकेडमिक कम्युनिटी को बोलते हैं कि what you are saying is far from the facts, and we also through research, rigorous research, establish it very powerfully, then I'm sure we will be able to contest such misperception creators. With relation to Hinduism, we'll get to there. But I also want to talk about, like you said, Hinduism and there is the Brahminical way, there is the Sanatan. There's also the Buddhist circuit. India is a land where Buddha attained enlightenment. The Dalai Lama got refuge in India when he faced persecution. Now, yet when you talk about Buddhism and Buddhist destinations, when you talk to anybody in the world, they'll say Thailand, they'll say Japan, they'll say Sri Lanka. Rarely do they talk about India. हाँ, हमने अभी Buddhist circuit का कर लिया, we inviting people from Southeast Asia. It's been going on for almost 10 years now. But why is it that it doesn't strike people in the world still? Again, inertia on our part. I mean, the previous governments were all very shy of talking about our spiritual traditions. Whether it was Jainism, whether it was Buddhism, whether it was Sikhism, whether it was Hinduism. I mean, simply to, I mean, it was all their hypothecated kind of way of thinking. एक इमेजिनेशन था कि अरे हम इतनी बात करेंगे तो उनको क्या लगेगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं था. हम हमारे प्रधानमंत्री जैसे अब कर रहे हैं कि इजराइल को भी साथ ले जा रहे हैं, पैलेस्टाइन के साथ भी मित्रता हमारी कायम है, हम कर सकते हैं. मगर हमारे देश के कुछ लोगों को क्या लगेगा, इसलिए आप इजराइल से मित्रता ही नहीं करोगे, इसमें कौन सी विजडम है? नहीं, पर बुद्धिज्म से किसको तो थ्रेट हो सकता था? नहीं ना, मगर कुल मिलाकर हमारे देश की अस्मिता से जुड़े हुए ये चार धाराएं हैं: Hinduism, Sikhism, Buddhism and Jainism. Religions that originated from India. Indic religions में Indic कहूँगा, religions, Indic traditions में कहूँगा. इनके बारे में दुर्भाग्यवश हमारे देश में पुराने समय में कोई असर्शन ही हुआ नहीं. कोई उसके बारे में जो भी उसकी गुणवत्ता है, जो भी उसका योगदान है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, गुरु नानक हो, इनके बारे में जितने अच्छे तरीके से हमने विषय को प्रस्तुत करना चाहिए था, हमने किया नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आसियान वाज एन एरिया जहाँ पे जब समिट्स होती थी, वहाँ पर हमारे बुद्धिस्ट सर्किट को बहुत ज्यादा, वी शुड हैव गिवन इम्पोर्टेंस, वी शुड हैव स्ट्रेस्ड ऑन दिस इन ऑल दोज आसियान समिट्स. इन द 72-year history of Indian Council for Cultural Relations, which I am heading these days, it was for the first time that we could have a Buddha Bhumi Vandana Yatra involving some 13 countries and 30 delegates who were all young Buddhist scholars. अभी हम बुद्धिस्ट स्टडीज में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ऐसे स्कॉलर्स को डेकोरेट कर रहे हैं. ये तो बरसों पहले करना चाहिए था जी. अभी हिंदू बुद्धिस्ट डायलॉग हुआ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, भारत सरकार का संस्कृति विभाग, इनके माध्यम से, तो कभी मंगोलिया से, कभी थाईलैंड से हमारे डायलॉग उस स्पिरिचुअल धारा में भी चल रहे हैं. Why should we be shy about it? And ICCR also does and has been doing for quite some time, Indian Council for Cultural Relations, which you head, about how Ramayana is linked. Yes. तो उसके बारे में वही है, मतलब good that you raise this subject, because I have a particular example to share with you. See, after 2015, ICCR has been engaging itself in conduct of Ramayana Festival, which is an international festival. And we invite troops from all those countries where Ramayana is a part of their tradition. तो उसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है,
मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बहुत सारे देश हैं। उसमें ब्रुनेई भी आया एक बार। तो ब्रुनेई से कोई आएगा हमें लगा नहीं था। हमारे जो अधिकारी काम कर रहे थे उनको लगा कि 100% इस्लामिक है, अनलाइक मलेशिया और इंडोनेशिया। सो दे वर ए लिटिल सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज. And during the recess, when the Brunei troupe presented a wonderful skit on the theme of Jatayu Vadha, which is a important story as part of Ramayana. तो जब बातें हो रही थी कि हमें तो लगा नहीं था कि आपके यहाँ से कोई आएगा, तो ब्रुनेई के उस कला पथक का जो प्रमुख था उसने कहा कि बॉस, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन, नॉट आवर कल्चर. मगर इसका हमें एहसास ही नहीं था. हम तो बेकार का इन लोगों को क्या लगेगा, उन लोगों को क्या लगेगा, इसी कवायद में अटके रहे. Why is that just brings me? Why is Jatayu such an important figure? I know. In Southeast Asia. मैंने वहाँ इंडोनेशिया में भी देखा, बाली में भी देखा है. Jatayu is very significant and in India. Not many people, if I was to take a camera right now and go and ask कि Jatayu कौन है, not many people will know, frankly, you know, a figure from Ramayana who people have mostly forgotten. And when you go to these countries, you realize that there are so many parts of Ramayana and of Mahabharata which these fables have got lost. You know, why Varuna is not seen, you don't see temples or you don't see idols of Varuna at all. You know, in India. Whereas in these countries, Varuna is very much worshipped. Jatayu is worshipped. There are big figurines. So it's interesting. Yeah, it is interesting and requires, it merits deeper research why there is so much of kind of love and affection, and not just love and affection, but reverence for the story of Jatayu and the kind of struggle he waged against Ravana, for that matter, in his bid to save Sita or to rescue her for that matter. तो ये बिल्कुल मतलब, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है, इंडिया में एक नरेशन होता है. जो रामायण और जो महाभारत का इंटरप्रिटेशन लार्जली नॉर्थ में होता है, वो ऑलमोस्ट टिल सेंट्रल इंडिया वैसे ही होता है, विद माइनर चेंजेस एज यू गो फर्दर साउथ, और इफ यू गो ईस्ट a little more towards Shakti worship, you know, a little more towards Mother Goddess, towards Western India. ये सब होता है थोड़ा बहुत. But certain stories have completely got lost. Like I still remember in Vietnam there was this large urn. और उसमें एक उधर था, and I just looked at it and I said, oh, it looks like the marriage procession of in Ramayana or something like that. It looks like that Ram Sita, and you can see all that. So then they said, see that and look under that. So I looked under that. I said, वो तो वही लग रहा है. Said, no, that is Shiva Parvati. Oh, really? And it is the wedding of that. So I said, एक में आप शिव भी और राम, you don't see that in India all that much. You don't see both the gods in one figurine. Correct. So they said what happened was that the carvers were brought from India. They were going to be there for 4 years or 5 years during the process of when the temple was going to be constructed. In that 4 or 5 years, they didn't restrict themselves कि ये विष्णु टेम्पल है तो हम विष्णु ही लगाएंगे, या ये शिव जी का एक मंदिर है उसमें सब कुछ आ जाता था. नहीं, वो तो है. और हमारे यहाँ इंटीग्रेशन भी है ना, मतलब हमारी आस्था में, हमारी श्रद्धा में, in our ethos, both the things are so very intertwined that although both the epics are in a way different, period wise also they are in different brackets. Yeah, exactly. But still, in our consciousness, they are somehow brought together. That has happened. I mean, and for also example, the way Shiva is depicted, the Ishana element of it, you know, the long hair and the mustache, and very different from, and it's that Rudra and that aspect of Shiva, which you see in, say, in the Korean temples, which you see in the Japanese temples, which you see in Indonesia. It's completely different from what you see in most of the Indian temples in central India. Very interesting. That is true. Yeah. These are different interpretations and different perceptions also. Yeah, and then to come back to the Ramayana circuit which you were talking about. So when you see Ramayana depicted on stage, say in a Manipuri style, or if you go further in a Vietnamese style, you go further, even Korea for that matter. In fact, if you could even tell Korea's connection with Ayodhya, that also is very interesting. बिल्कुल.
तो अयोध्या और कोरिया का कनेक्शन और वहाँ की महारानी के संदर्भ में जो भी मतलब हमारे यहाँ भी जानकारी है, वहाँ भी जानकारी है, लोगों में अपार श्रद्धा भी है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसलिए इन सारी चीज़ों के आधार पर एक मिला जुला भाव विश्व, जिसको हम इथॉस बोलते हैं, वो बना हुआ है। एंड देयरफॉर मेनी टाइम्स इट comes to my mind that we have several groupings like G20, G70, G this, G that, and maybe BIMSTEC and SARC and whatnot. Perhaps we can also float another grouping, which is Rama and Mahabharat countries. Because there are so many countries that are linked to the stories of Ramayana and Mahabharata. You will not believe, I was in Baku few years before, which is the capital city of Azerbaijan. And right in the outskirts of the capital city of Baku, there is a fire temple. और वो मैं देखने के लिए गया पारसी फायर टेम्पल? नो नो नो, इट इज़ हिंदू फायर टेम्पल। ओके। और कहानी बताते हैं कि दक्ष और सती, इनके बीच जो भी हुआ, और सती के टुकड़े टुकड़े करके उनको इतस्ततः एक दृष्टि से फेंका गया, तो उसमें सती के अंग का एक भाग, एक हिस्सा बाकू में गिरा, लाइक अ शक्तिपीठ। तो वो एक शक्तिपीठ माना जाता है। और वहाँ पर बीचों बीच अग्नि मंदिर है, और जो चार दीवारी है उसके ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनियों के चित्र भी है, वक्रतुंड महाकाय इंस्क्राइब किया हुआ है, गणपति है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Nobody would have imagined that the message of, in a way, Indian scriptures has gone right up to Baku. Even in Trinidad and Tobago, the indentured workers who went, or to South Africa, they have their Ramayana part which happens and things like that. So these are connections in. So I'm of course going to come, so that, you know, there is also a view that which you were talking about when you spoke about Brunei, that when it comes to ICCR, when it comes to you know, government bodies which promote Indian culture, it tends to be the Hindu culture. There is also a Parsi culture, there is a Buddhist culture, there is a Sikh culture, there is an Islamic culture, very thriving minorities and their religion. Is there enough done to promote that aspect also in rest of the world? Yes, yes, of course. For example, जब गुरु नानक जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया, तो विश्व भर के युवा सिखों की एक हमने यहाँ पर एक यात्रा, तखत दर्शन यात्रा आयोजित की थी, और उनका 2 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया कि सिख गुरुओं ने इस देश के लिए क्या किया है, विश्व समुदाय के लिए क्या किया है, वो उनको बताने का काम। एंड लेटर ऑन वी टुक देम टू अमृतसर, टू पटना साहिब, टू नांदेड़, and everything was done by ICCR. Similarly, I already have spoken about the Buddha Bhumi Vandana Yatra, which is also a part of our culture, and therefore that requires to be projected, that requires to be talked about. When it comes to Islam, सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में विशेष रूप में हम ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि बाकी सारी बातों में विश्व समुदाय में काफ़ी आकलन है, चर्चा भी है, बट सूफ़ीज़म एंड सूफ़ी म्यूज़िक essentially is something which has a stamp of India. Tell me, what is different about Islam in India as compared to Islam in the rest of the world? If you can club rest of the world in one grouping. Well, I would only say, if not 100%, because I am not that way a student of theology or... but you have to project Indian... Yeah, that is true. So whatever I have observed all through these years is that in India, thanks to the culture of spiritual democracy over here, Indian Muslims are comparatively more accommodative to different cultures. I would say comparatively, of course. And therefore, there are many examples of how some of the Hindu traditions have been, in a way, emulated by the worshippers of Islam here. तो ये तो है. और उस दृष्टि से देखें तो ये जो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती है, उसको भी कहीं ना कहीं मान्यता दिखाई देती है. अभी मैं कश्मीर गया था, तो वहाँ पर हमें लाल देद के बारे में पता है, लल्लेश्वरी के बारे में. तो उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ चमत्कार जिस जगह पर हुआ था, पामपुर के अंदर एक छोटा सा मैदान है जहाँ पर एक कुआं है, और उसके साथ जुड़ी हुई कई कहानियाँ हैं. तो मुझे वो स्थान देखना था, तो लोकल हमारे कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया था. तो जो एक मुस्लिम मौलवी वहाँ पर आए कहानी बताते हुए,
तो उनके आंखों में आंसू थे लल्लेश्वरी के बारे में. एंड लल्लेश्वरी in a way symbolizes the confluence of Hindu and Islamic, in a way, what I should say, ethos. Because she has earned place in the common ethos of both the communities. But her story In Jammu got and lost Kashmir. over the years. I know. We need to revive because these are the symbols of our unity in diversity or unity of diversity, if I may put it that way. और इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से, अभी मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जैसे ईरान के अध्यक्ष आए थे 2018 में भारत, तो उस समय जो चर्चा हुई होंगी उनके हमारे देश के नेताओं के साथ, उसमें एक विषय आया कि महर्षि पाणिनि इज़ द ग्रेट कनेक्टर बिटवीन people who speak Persian and people who speak Sanskrit, because he is the grammarian who has created the linguistic structure of both these languages. And therefore it was decided that we should do something to commemorate the contribution of Maharshi Panini as a grammarian. In Iran. In Iran. And therefore ICCR, we have a center over there, Swami Vivekananda Cultural Center in Tehran. So they were asked to take initiative, and with the help of the University of Tehran, we organized a 2-day conference on Panini's contribution as a grammarian. And I was there. I went and saw the Tehran University Vice Chancellor. He had asked me to join him for a breakfast. And during our discussion, he asked me one pertinent question. He said, Mr. Sahasrabudhe, in Tehran University, we teach Upanishad. Tell me, in which Indian university Upanishad is being taught? Upanishad is taught in Tehran? Yeah, that is what I'm saying. And it has come from the horse's mouth, the Vice Chancellor himself telling me. That must have been very awkward for you. No, awkward in the sense, immediately I had no Answer. name That's of true. a university to be cited over there. Although I know that there are many universities, majorly in South India, in Pune, or in many such places where Upanishad is a part of their syllabus. Okay. But then immediately nobody- I had no answer. I mean, I didn't expect this kind of a question will come, and that too in Tehran. तो ये तो है. तो कई बार जो होता है ना कि हमें ही most of पता us- नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. And also, a lot of our perception about certain countries is based on a Western perception. Precisely. So एक बार हमने सोच लिया कि ईरान ऐसा है, तो माइंड में वो बैठ गया, बिल्कुल. और वो बिठाने वाला होता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन. जैसे ब्रुनेई के बारे में कहा कि हाँ इस्लामिक है. नॉट मेनी पीपल वुड नो द कनेक्शन दैट इट इज बियॉन्ड दैट. Right? Now that comes to the point is that storytelling. Unless you tell your own story, nobody will know about it. Precisely. So where have we been lacking, and what are the changes that are happening now? See, we have been lacking in insofar as the scholarship about India, whether Indology or whether contemporary India studies or what they call it South Asia studies are concerned. We need to overhaul we need to initiate a process where the entire syllabus is overhauled. In fact, ICCR has been conducting international conferences on Indology, and I have mooted the idea that time has come that we need to talk about new Indology. Where is Indology taught? Many countries in Europe, essentially. Okay, I'm talking about India, sir. In India, Indology as a subject is not so very commonplace, I understand, because we teach other aspects of Indian history and Indian culture for that matter. But all things put together, what comes as, loosely I am saying, there is no kind of a very strict definition of it. But in countries like Latvia, Lithuania, all the Baltic countries, or even in Switzerland, for example, there are people who run the departments of Indology. So time has come that we should shape Indology afresh. The very content of Indology. And we should be talking about the contemporary India as well. See, whenever people discuss India, generally speaking, they talk about the medieval history of India. The ancient history is forgotten. Today in Delhi, we see all kinds of roads. And till recently, there was Aurangzeb Road as well. But there is no Harshavardhan Road. There is no Chandragupta Maurya Road. Why? There is no Samudragupta Road. There is no Mahaji Shinde Road. Why? Mahaji Shinde was, in fact, kind of ruling this capital city for 30 long years, between 1772 and 1802. मगर हम भूल जाएंगे उनको. ये जो विकृत मानसिकता है ना,
कि उसके कारण हमने ही हमारी इंडोलॉजी को बहुत संकीर्ण किया, बहुत सीमित रखा, जिससे हमें उभर कर आना चाहिए और कंटेम्पररी इंडिया की भी कहानी लोगों को बतानी चाहिए. Because abhi tak to in the program we've only been talking about projecting India's soft power, but it is important, like you were saying, to realize it yourself. How can you project it without realizing? Bakhtiarpur was the village, and I went and asked in that village. I took the camera and I went and said, Bakhtiarpur hai naam, and who is, do you know against whom, and do you know what he did? They didn't know. इसी रो में there is Som Vihar right out here, which is, I said, do you know why it's called Som Vihar? Not many Nobody people knows. know about Major Somnath. So the point is there is no curiosity to know more. It's everywhere. It's like when you talk about people in Delhi, you ask, आप ग्रेटर कैलाश, ईस्ट ऑफ कैलाश, कैलाश कॉलोनी में रहते हैं, कैलाश कहाँ पे है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, वेयर? दे विल से साउथ दिल्ली. नो, कैलाश कहाँ पे है? एक्चुअली कैलाश कहाँ पे है? At least if I take the camera and ask, I'm 100% certain maybe 20% people will know कि कैलाश कहाँ पे है. I'm sure in the comment section people say, आपको नहीं पता तो आप समझते हैं सबको नहीं पता. But that's not true. It does happen. So I think to a large extent the country is at fault for not one, having pride about our own culture, and two, when you don't have pride, you don't want to know about it. The desire or the curiosity. I know. I mean, unfortunately, Smita ji, I would say that to be patriotic was considered as to be retrograde. That was somehow filled in our minds कि देशभक्ति जैसे कोई बुरा शब्द है या बुरी संकल्पना है, उसको एकदम से जिंगोइज्म वगैरह इस तरीके से शब्दों से बताया गया. एंड देयरफॉर द इग्नोरेंस कंटिन्यूड, एंड देयर आर सेवरल केसेस वेयर वी कैन से दैट पीपल डोंट नो दैट दे डोंट नो. और इससे अधिक दुर्भाग्य की स्थिति नहीं आ सकती. ये वास्तविकता है. तो जैसे अभी मैं आप उसको बख्तियारपुर की बात कर रही है. डू यू नो, इन महाराष्ट्र, and I'm sure everybody knows about the history of Chhatrapati Shivaji Maharaj and the well-known Pratapgarh battle, and especially how Chhatrapati Shivaji Maharaj killed Afzal Khan, who had come from Golconda on a kind of a war campaign sort of. तो वो जो मुहिम पर आया तब उसको अंदेशा हुआ था कि जो उसकी 62 पत्नियां हैं वो जिंदा नहीं रहेगी, और वो जिंदा नहीं रह पाएगा. तो इसलिए उन 62 62 वाइव्स उनको उसने मार गिराया before even setting out. Shivaji Maharaj was just an excuse. He just wanted to maybe. Sorry, that's an aside. Very sadly, उन 62 महिलाओं की जो उसकी पत्नियां थी, उनकी समाधि, I mean, I'm shocked to know the word that samadhi has been used for that. वो वहाँ पर गोलकोंडा में है, and it was converted into a national monument. Can you believe? So they died before he died. Yeah, he killed them. Yeah. With the idea that he is going to. Correct. And still there is a decorated kind of a structure over there which is called as samadhi. And whereas मतलब उसकी बर्बरता के लिए एक मिसाल है वैसे. तो बर्बरता को ही हमने इतना उत्तेजन दिया. और जो महारानी तारा रानी, जो छत्रपति राजाराम की पत्नी, जिन्होंने स्वराज के लिए इतना संघर्ष किया, उनकी समाधि नहीं थी. अब सरकार कर रही है. मगर ये मानसिकता थी. वहाँ प्रतापगढ़ में अभी महाराष्ट्र में जो सरकार अभी है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की, उन्होंने इसको बंद किया. किस चीज़ को? वहाँ पर अफजल खान की भी, एंड आई एम यूजिंग द टर्म, समाधि है. हम स्कूली बच्चे थे, प्रतापगढ़ पर गए थे, मैं 7वीं कक्षा में था, तो हमें बताया गया कि ये अफजल खान की समाधि है. कैन यू इमेजिन? और वहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता है और किस पद्धति से अफजल खान का महिमा मंडन किया जाता है. इज इट नॉट वोट बैंक पॉलिटिक्स? उनको क्या लगेगा? तो यही चलाया गया हमारे देश में, और इसके कारण विकृत और भ्रांतियों का एक जाल इस पद्धति से फैलाया गया, वेयर इन वी केम इनटू ए वेरी सॉरी स्टेट ऑफ द थिंग्स वेयर वी डोंट नो दैट वी डोंट नो. I was heading the Parliamentary Standing Committee on Education, and we did a good report, I would say, on textbook reforms.
तो टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स की जब हम लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे, यहाँ गुड़गांव में रहने वाला एक 7वीं कक्षा का बच्चा, and he was perhaps he made a history by deposing before the committee. He was the youngest person to depose before a parliamentary standing committee. And he said that we have been fed to learn about Akbar and Aurangzeb in so many paragraphs, and about Rana Pratap there are just 4 lines, and Chhatrapati Shivaji just 5 lines. So there's also another view which is important in a democracy. Every view has to be taken, that this rewriting of the textbooks, rewriting of history, what you are saying is that the wrongs of the past are being corrected, whereas there is a large group which feels that you are trying to negate or erase a part of history which was there, which happened in the country, and you are bringing in the Hindu history to the forefront. सी, जैसे मार्केट की परिभाषा में करेक्शन आता है ना, जब बेकार का मतलब किसी शेयर को बहुत ज़्यादा चढ़ाया बढ़ाया जाता है, तो एक बार करेक्शन आता है तो वो शेयर का भाव भी उतर जाता है. ऐसा ही हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री रिक्वायर्स टू बी रीविजिटेड, एंड इन द हिस्ट्री यू विल कम अक्रॉस सेवरल सच एग्जाम्पल्स वेयर हिस्ट्री हैज़ बीन रीविजिटेड. This revisiting, reassessment, re-evaluation is a part of our scholarship in a way. Like it's उसमें happening कुछ in गलत नहीं America है. हाँ about बिल्कुल, colonialism. सब जगह होता रहा है. तो इसमें अगर आपने भारत के एंशंट हिस्ट्री को दबाए रखा, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यहाँ पर औरंगजेब रोड था अभी तक, अकबर रोड है, और पता नहीं शेर शाह रोड और क्या क्या रोड है, मगर चंद्रगुप्त रोड नहीं है, यहाँ पर हर्षवर्धन रोड नहीं है, यहाँ पर समुद्रगुप्त रोड नहीं है. ये क्यों नहीं है? तो बना सकते हैं. वाई इरेज औरंगजेब? हमने कहा इरेज केवल औरंगजेब का किया, बिकॉज बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन यू कैन नॉट कॉल हिम ए हीरो ऑफ इंडिया. जिस बर्बरता से उन्होंने काम किए हैं और जिस पद्धति से इस देश के स्वाभिमान को कुचलने की कोशिशें की है, वी सर्टनली कैन नॉट, एंड दैट वाज ए प्रोजेक्ट लॉन्ग ओवरड्यू. अच्छा है कि वो इस जमाने में हो गया. तो मगर हमने उस पद्धति से शाहजहां रोड को मिटाया नहीं है, अकबर रोड को नकारा नहीं है. ठीक है भाई, दे आर ए पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री. तो हमारी भूमिका बहुत संतुलन की है, बैलेंस की है, सभी को सम्मान देने की है, बहुत डेमोक्रेटिक है. अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय की बात करिए. ये क्या मतलब, वॉज इट रिक्वायर्ड दैट वी हैड टू हैव ए government led by Prime Minister Modi, wherein the idea of respecting the contribution of all the prime ministers could be recognized and properly established. क्यों केवल एक का ही महिमा मंडन किया जाए? क्या क्या वजह है इसमें? क्या लॉजिक है? ये क्या डेमोक्रेसी की जो ग्रेन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अनुरूप है? क्यों नहीं चंद्रशेखर जी को भी सम्मानित किया जाना चाहिए? क्यों नहीं देवेगौड़ा जी का भी नाम हमने लेना चाहिए? नरसिंह राव, उनको तो यहाँ पर अंत्य संस्कार करने की इजाज़त नहीं दी गई. तो अब जब समय बदला है तो हम तो एक करेक्शन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं. हम जिनके ऊपर अन्याय किया गया था उनको न्याय दे रहे हैं. So does that mean erasing anything and everything that Pandit Jawaharlal Nehru did for this country? Not at all. I will certainly appeal through this particular podcast to the viewers that please go and visit the Pradhan Mantri Sangrahalaya, and you will find the way we have, and since I am a part of the executive committee of Pradhan Mantri Sangrahalaya, I can say it with enough confidence that the way we have projected Jawaharlal Nehru and in a way commemorated his contribution, I think is far too superior than what earlier regimes had done through the Nehru Sangrahalaya. तो ऐसा कुछ नहीं है. और वहाँ पर इंदिरा गांधी जी के बारे में भी है, उनके अच्छी बातों का भी वहाँ पर गुण वर्णन है. लाल बहादुर शास्त्री का भी महिमा मंडन है. राजीव गांधी ने जो काम किया उसका भी अच्छे तरीके से उल्लेख है. मनमोहन सिंह के बारे में भी है. क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए. Okay. Sir, let me come to the RMP Institute, which you impart leadership training. It's associated with the BJP. So is it an extension of the RSS training module which you do out there? Well, yes and no, because it is not exactly what RSS is doing. See, there is a history to that, and I am sure you would realize the importance of it. See, world over, if democracy is not rising to the expectations of the people, one of the reasons is that our political leaders, especially the elected representatives, are failing the idea of democracy.
since they are not able to perform, they are not able to deliver the goods, deliver democracy for that matter. People are becoming disillusioned with the idea of democracy. And I'm not saying this in India, but majorly in those countries which had earlier a communist autocratic regime, like several former USSR countries. In most these countries, and there are researches available, where people are disillusioned by the post-Soviet regimes, although they are democracies. And their view is that these democracies have not served anything For to the our people. plate and has not brought any new value addition to our lives. तो ये क्यों हो रहा है? Because of the inability of the elected representatives. ये inability क्यों है? क्योंकि चुनकर आना यही एकमात्र क्राइटेरिया है. क्षमतावान होना ये तो क्राइटेरिया नहीं है. चुनकर कब आप आते हैं? जब आप जनप्रिय हैं. But then popularity is one thing and ability to govern is a different thing. So those who have established their popularity by way of getting elected, who will take care of their human resource development? The answer is Rambhau Mahalgi Prabodhini. And not just Prabodhini. I am not saying this is only for BJP. In fact, the institution has now earned such a name by the blessings of all our seniors that many people belonging to other ideologies and other political parties also knock our door and request us to conduct capacity building programs for their elected representatives. So when did you realize that the country needs this? This was realized by great thinker, politician like Pandit Deen Dayal Upadhyay. And the idea, the germination of the idea of or the concept behind Prabodhini comes from Pandit ji. It was his idea which was taken up by Rambhau Mahalgi, who was a member of parliament from Maharashtra and wanted to dedicate his life for the creation of this institutional setup. He could not because he died at a very early age, relatively at the age of 61 in 1981. So to commemorate his work, people associated with him decided to establish an academy, which is Prabodhini in Sanskrit or in Marathi, and in the name of Mr. Rambhau Mahalgi, which is why this Rambhau Mahalgi Prabodhini came up. We started working in 1988. I can humbly put it that I was the first functionary of the Prabodhini. Started work in a small room with just one table and chair, and now we have a sprawling campus in the outskirts of Mumbai in Mira Bhainder on a 15-acre plot where people from various parts come, even corporates come and undertake their training, and political parties also send their representatives. Many government bodies, including the Women Commission, the SC/ST Commission, they also realize the need for building the capacities of their people. I mean, For leaders of tomorrow, you need strategic thinking, you need conflict resolution, you need decision-making powers, clarity in thought in these matters, how to deliver this for the good of the people. तो इसके बारे में आप समझाइए कि कहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे आप देखते हैं कि दिस पर्सन हैज़ द कैपेसिटी और नॉट, एंड देन हाउ डू यू बिल्ड अ लीडर फ्रॉम दिस? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि जिसको सीखने की इच्छा है वो हमारे लिए स्वागत योग्य है. दैट इज गुड इनफ. हाँ. फिर उसके अंदर तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. नंबर वन, ही हैज़ टू हैव ए कॉन्क्रीट आंसर विथ हिम एज टू व्हाई ही इज देयर वेयर ही इज इन पब्लिक सर्विस. या if I am a political functionary, why am I a political functionary? I mean, do I have any objective? Do I have any goals? Do I have any lofty ideals? Or just because I wanted to be there in public life, I am here? So the Mostly rationale... what do people say? No. People have to see a training like situation helps people think about. किसी ने सोचा ही नहीं होता. They are a part of the rut. तो इतनी हर रोज की भागा दौड़ी में उनको ये सोचने के लिए अवसर ही नहीं मिलता. जब इकट्ठा आते हैं, एक ही छत के तले विचार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चर्चा करते हैं, तो द सर्च लाइट इज ऑटोमेटिकली टर्न्ड इनवर्ड. दे इंट्रोस्पेक्ट. सो आइडियोलॉजिकल मोटिवेशनल ट्रेनिंग इज पार्ट वन. Once that is done, we move on to some kind of training which is called as functional training, wherein you get to know the rules, regulation, acts, legislations, the mannerisms, the processes, everything. And the third one is skill training.
wherein you have to understand how to speak good, how to speak well, how to imbibe the skills of public speaking. And there are men and women who are being Yeah. trained. And women in good number, they are more interested. और इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं हमारे महिलाओं के प्रशिक्षण के कि जिसके कारण महिलाओं को वो एक स्पेस मिल जाती है ना. पहली बार जब हमने केवल महिलाओं का एक प्रशिक्षण वर्ग किया था, आई थिंक 95 96 की बात होगी, तब सारे विभिन्न दलों की महिलाएं इकट्ठा आई थी. एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था और सारी महिलाओं ने, instead of we issuing a certificate to them which we normally do, they issued a certificate to the institution saying कि पहली बार हमारे पति और बाकी पुरुषों से अलग अपनी एक स्पेस को एंजॉय करते हुए हमने एक ट्रेनिंग का अनुभव किया. वी आर थैंकफुल टू यू. So, I'm going to come back to the issue we were talking about, projection of soft power. In this, what happens is that there are many times that our leaders go abroad. They talk about India, they project India. It could also be not just the leaders, it could even be an ICCR troop which is going. अब वो जब वहाँ जाते हैं, they represent India, they represent Indian culture. If they don't project it properly, it tells badly on India. Is there a training which is imparted to those who represent Indian culture when they travel abroad? Generally speaking, yes, it's not a very structured training because people who understand Bharatanatyam or who perform, let's say, Satriya dance or any other Indian dance variety, or even the classical music, or even for that matter, our instrumental music, most of them are ingrained in our traditions, whether it is Guru Shishya Parampara or everything. And in our country, every art form is linked with our spirituality. हम जितनी भी कलाओं की साधना बोलते हैं ना उसको, तो वो तो एक तपश्चर्या ही होती है और उसमें भी कोई एक देवता होती है. जो भी आपको उचित लगे वो देवता हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं. अभी हमारे मीरठ जैसे शहर में ये तानपुरा बनाने वालों की बड़ा समुदाय है. मोस्ट ऑफ देम आर फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम. एक यूसुफ मुल्ला जी है, उन्हीं के तानपुरे भीमसेन जोशी जी यूज करते थे. तो उनके बेटे ने हमें अप्रोच करके कहा कि मोस्ट ऑफ अवर तानपुराज, इफ वी लाइक क्रिएट 100 तानपुराज एवरी ईयर, 70 ऑफ देम आर एक्सपोर्टेड and they go to majorly in New Jersey, New York area or in UK. Whereas I would think that once the rags and the tals and things started coming in boxes and it was easier. तो वो तानपुरा एक तो if you're a classical singer, इधर उधर जाना, उसको hand carry करना पड़ता है, उसको डब्बे में डाल के आप check in करेंगे तो टूट जाता है. तो they would travel with the boxes. Not really. But it's really changed. Not really, because people understand. मशीन का अपना एक महत्व है जी. एक कॉम्प्रोमाइज के रूप में आप वो लगा लेते हैं, मगर तानपुरे की जो आवाज है, उसका जो नाद है, उसकी जो मधुरता है, उसकी जो नजाकत है, वो अलग है. So it's being exported to the US. And not only that, ICCR changed its policy and now we have decided to send the artisans also, because there are issues about the maintenance of tanpuras and rudravinas and several such string instruments. Sir, two things I want to talk about: yoga and cuisine. Cuisine की जब बात होती है, then the whole thing about turmeric, about patents, and then most people say कि हाँ ये balti chicken, chicken tikka curry, this is what is associated with India, but there is so much more to cuisine. Why do we not talk about cuisines which are lost, cuisines which represent India and not just one which the British made India famous for? And that whole talk, in fact, today somebody was saying that, with this Israel-Hamas war, people are so aggressive and so angry. So the Israelis are not going to Palestinian restaurants, Palestinians are not going to Israeli restaurants abroad. लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ चाहे जितना भी झगड़ा हुआ है, हम लोग जंग भी लड़े हैं, लेकिन इंडियंस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स में आते हैं. As far as cuisine is concerned, Indian cuisine is not a divisive force, is not a divisive force, it is unifying. Well, if I may also add very humbly that no part of Indian culture is divisive. We are always integrationist. और इसलिए cuisine में भी आज तो बात ऐसी है कि Indian restaurant has itself become a brand. And there are many people from neighboring countries who run an Indian restaurant, although they are not Indians. Correct. So, और and the cooks even in an Indian restaurant may all be from Sylhet. Yeah, when it comes they to could be from anywhere, in UK. but the brand is Indian.
लोग मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, मगर उस देश के नाम से आप रेस्टोरेंट चला के देखिए कितना चलेगा, और इंडियन रेस्टोरेंट नाम से चला के देखिए. सो you were saying that why we are not recognizing the culinary and cuisine traditions. I would say we have started. Okay. And during the last couple of years, we have decided, and now this year we have implemented it, which is we are recognizing such Indian restaurants which are serving Indian food, largely pan-Indian food, South and North both, if not East and West as well, and who are there for almost 5-6 years working with an unblemished kind of record. And they have made a mark insofar as attracting footfall of the locals, not just NRIs. We have decided to recognize them. We formed a selection panel with the involvement of several globally recognized chefs and others. And this year, the Annapurna certificate was announced on World Food Day on the 15th of October. What is that certificate? ये सर्टिफिकेट जैसे किसी रेस्टोरेंट की गुणवत्ता का एक परिचायक है. गवर्नमेंट सर्टिफिकेट. हाँ, मतलब ICCR दे रहा है. ICCR, हाँ. हाँ. तो इन 6-7 रेस्टोरेंट्स को हमने दिया है, जिनके शेफ्स और जिनके मालिक अभी दिसंबर में भारत में आएंगे, और उनका हम सम्मान पूर्वक अन्नपूर्णा की एक मूर्ति देकर सम्मान करेंगे. उनको पहले से एक प्लाक दिया गया है जो डिस्प्ले करेंगे कि दिस रेस्टोरेंट इज रिकॉग्नाइज्ड थ्रू अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट ऑफ द ICCR. That is, it is authentic Indian food. Correct. Authentic Indian food, quality Indian food, Okay. and a recognition of their contribution to India's soft power in a way. हाँ, okay. क्योंकि Right. उनकी भी तो पीठ थपथपानी चाहिए ना. हाँ, हाँ. और न केवल रेस्टोरेंट्स, मैं तो कहूँगा कि हमारे ढेर सारे मतलब जीवन के अंग जितने हैं उनमें हमारे लोग काम करें. आई वॉज देयर इन मॉस्को एंड द लोकल एम्बेसी पीपल टोल्ड मी दैट देयर आर एटलीस्ट half a dozen Indian tailors who have become famous over here doing a brisk business because Bandagada is becoming extremely popular. Oh, okay. तो इंडियन एपरल्स भी अपना ही एक विशेषता रखते हैं. I knew about Indian साड़ी fabric. के बारे में हाँ. भी, इंडियन फैब्रिक के बारे में भी, साड़ी के apparel इंडियन I didn't डिजाइन. know. हाँ. हाँ, मतलब तरह तरह के, जितना देखिए वही तो है ना, ये खूबसूरती है हमारी संस्कृति की जी. कि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं. Handicrafts, of course. हाँ, बिल्कुल. हाँ. तो इनको हम जितने अच्छे तरीके से लोगों के सम्मुख ले जाएंगे, मार्केट करेंगे. आयुर्वेद वही हाल है. हाँ. अभी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स विश्व के हर कोने में आपको दिखाई देते हैं. But there's a lot of mumbo jumbo which goes under the umbrella of Ayurveda, under the umbrella of yoga, which is, it is not patented. I It is agree. not. I agree. There is no. Our collective inertia to be blamed for that. But we have made a correction. From If I may- Bikram yoga to dog yoga to hot yoga to beer yoga. Beer हाँ, yoga. I mean, you might not have heard, but there No. are so many perversions of it. हाँ. But if we have missed the bus in the context of yoga, at least in the context of our traditional dance, our dance traditions, we should not be doing that. Which is why we have now decided to have a panel. The panel is already working, and we are going to, as ICCR, accreditate the trainers and training institutions who are teaching Bharatanatyam, Kathak and Odishi to the students abroad. क्योंकि मैं अगर अमेरिका में रहता हूँ और मुझे इच्छा है कि भरतनाट्यम पढ़ना है, तो भरतनाट्यम ऑथेंटिक है या नहीं ये मुझे कैसे पता चले. तो एगमार्क जैसा कुछ होना चाहिए. तो हमने ICCR का एक्रेडिटेशन देना तय किया है. और ऐसे जो गुरु है, जो एक्रेडिटेड है, उनके माध्यम से आपको ऑथेंटिक भरतनाट्यम, क्योंकि भरतनाट्यम में भी मिलावट खोरी नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है. इनोवेशन के नाम पे. हाँ, मतलब किसी भी नाम के मार्केट को सहेजना है. और इसलिए दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलिज्म, आई वुड से. Okay. And who will do this? You have There a is a team of experts. panel of Okay. experts in all these genres for that matter. Right. तो उनका हमने एक सर समूह आप तैयार. इतना वाइडली ट्रैवल करते हैं, आपने तो देखा होगा जहाँ पे भी आप जाते हैं, वी आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री. जैसे बॉलीवुड कहा जाता है, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हो, इवन इन प्लेस लाइक जापान, रजनीकांत इज एन आइकॉन, राइट. यू गो टू अफगानिस्तान, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान इज एन आइकॉन. यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट there is a section of the film industry which feels that they are looked down upon by
the powers by government of India. I'm not talking about the current government or the previous government. I'm saying that mostly even the academic culture is like they look down upon the film industry. ये populist है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब it doesn't get the respect that it ought to get, but it is a major soft power tool in the hands of our. Do you agree with that? Entirely. I cannot agree with you more. When I had the chance of visiting Uzbekistan, in Samarkand, in Bukhara, wherever we went, we were received with a welcome by a band playing the tunes of Awara. So that Mohini, that impact continues. I mean, maybe decades after. तो ये तो है. तो भारत का म्यूजिक, भारत के फिल्में, अभी कजाकिस्तान में हम गए थे, वहाँ पर लोगों ने कहा कि वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी विथ इंडियन मूवीज, स्पेशली टीवी सीरियल्स लाइक सास भी कभी बहू थी एंड सो फोर्थ. बट दे सेड वी वांट देम इन कजाक सबटाइटल्स, नो मोर रशियन सबटाइटल्स. अभी ये जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है उसको हमें कैटर करना पड़ेगा. ये हम करेंगे तो निश्चित रूप में होगा. और जहाँ तक प्रतिष्ठा की बात है, मैं मानता हूँ कि अब ऐसा नहीं रहा कि हमारी फिल्म जगत को उस लिहाज से नहीं देखा जाता. जरूर देखा जाता है और भी उसमें तरक्की होनी चाहिए, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ आर्ट एंड बेसिकली सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉलेज, जिसको हम क्रिएटिविटी बोलते हैं, वो सारा उसमें दिखाई देता ही है ना. उसके लिए भी देखने की एक पद्धति होनी जरूरी है. The projection of Indian culture, it used to be in a haphazard and confused manner. But when we saw it at G20, it really opened our eyes that it can, and when we spoke to some of the delegates and those who had come, they were quite amazed at the enormity of it all. You know, कि हर जगह आप, हर शहर, हर गांव में जाके आप इंडिया को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट पावर हो गया even for the locals, for Indians also, not just for the delegates who had come. There was a sense of pride that हाँ हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, हमारा culture देख रहे हैं. That was one. The second was, I just saw an interview of Alia Bhatt, which ran on one of the channels, and she said that the question asked to her was, जब national award मिला, तो what was the first thing that you thought? So she says, when I came, it was all so well organized. एंड आई वॉज लाइक, एक बार फिर से सुनूं क्या बोला है, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ विज्ञान भवन में कोई इवेंट है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग इट इज़ वॉट यूज टू ऑलवेज बी देयर. प्रगति मैदान जहाँ पे होता था, इट वॉज डिसऑर्गेनाइज्ड, वेदर इट इज़ द ट्रेड फेयर वॉट एवर. द कॉन्सेप्ट वॉज दैट एनीथिंग इंडिया डज, there is a madness to it. And then there was this cute term called method to madness, like our roads, कि हाँ, this is the Indian way of doing it, of confusion, and फिर last minute like an Indian wedding सब कुछ ठीक हो जाता है. But now there was this systematic way. There is a change in the way things are done in India. It gives me an immense sense of pride. Absolutely. I mean, the way things are now being presented, very neatly, systematically. See, we were traditionally also perhaps, while we were a knowledge society, but perhaps we lacked in the art of presentation. And today, the jamana is such that simply to be good is not enough. You have to appear to be good. And this perhaps we have learnt of late, and very effectively learnt. The way we conducted during the G20, or the way we present our culture elsewhere in the global community, all over the world for that matter, without being shy, without being apologetic. We are now taking pride, a legitimate pride, I would say. We are not unnecessarily trying to be jingoist for that matter. मगर ये सारा हम कर रहे हैं. जैसे देखिए, स्वाधीनता के ज़माने में चाहे लोकमान्य तिलक हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, वीर सावरकर हो, इन सबों ने, इवन महात्मा गांधी, स्व पर बहुत बल दिया था. स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा, तीनों का महत्व था. It was not for no reason that Gandhi decided to have that loin cloth only. क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरी भूषा है और मुझे उसमें कोई शर्म होने की, कोई महसूस करने का कोई कारण नहीं है. Similarly, the talk of education in mother tongue today, it links to स्वभाषा. लोकमान्य तिलक जी ने उस जमाने में कहा था कांग्रेस के अधिवेशन में कि लोग अपनी अपनी मातृभाषा में भी बात करें, कोई चिंता नहीं.
The way we love our mother and our motherland, we have to love our mother tongue as well. ये बहुत जरूरी है. मैं रूस गया था तो वहाँ के एक हिंदी ट्रांसलेटर ने कहा मुझे, शी इज़ ए 70-year-old टीचर टीचिंग हिंदी इन मॉस्को यूनिवर्सिटी, that I must thank your Prime Minister because he comes here and speaks in Hindi, which is why people like us have now got some job. नहीं तो अंग्रेजी में ही बोलने वाले प्रधानमंत्री थे आपके, तो हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं था. बट नाउ हिंदी टू रशियन ऐसा अनुवाद करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले लोगों को काम मिला. आप मातृभाषा की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर यही एक्यूजेशन है कि इट इज़ हिंदी इम्पोजिशन. देयर आर 5 states in South India and all of them feel across the board that your party tries to bring about imposition of Hindi. वहाँ जाके आप हिंदी में बात करते हैं and हिंदी को encourage करते हैं. It is language politics played by them, I am sorry to say. I can vouch for this, that the amount of Tamil quotations that have been used by Prime Minister Narendra Modi, there was perhaps no previous Prime Minister who would have quoted the great celebrated Tamil poet Thiruvalluvar the way Prime Minister Modi has done. सुब्रमण्यम भारती, किसने उनकी जन्म शताब्दी को मनाया? तो मैं मानता हूं कि ये हम तो, मलयालम भी हमारे लिए उतनी ही पवित्र और सम्माननीय भाषा है, कन्नड़ा है, तेलुगु है, तमिल है, सारी भाषा, मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए. Does that make us, if we give so much emphasis on the mother tongue and learning in the mother tongue, will that make us non-competitive in the world? Because so far, like our software professionals and all, when they went, we had an edge over many others because of our English language medium of instruction in schools. Will that make us less? Not at all. I think, see, it's a process of evolution. जब तक हम देखो फ्रांस में जाएंगे तो आपको फ्रेंच में ही मेडिसिन सीखना पड़ता है. अभी कई भारतीय बच्चे चाइना जाते हैं, रशिया जाते हैं और वहाँ पर मेडिसिन पढ़ते हैं, तो वो तो पहले रशियन पढ़ना ही पड़ता है उनको. तो अगर हम हमारी भाषाओं में, मराठी में, गुजराती में, उड़िया में, असमीज़ में अगर मेडिसिन पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो क्या आपत्ति है? सी, आवर एम्फोसिस ऑन मातृभाषा इज नॉट समथिंग विच इज एंटी इंग्लिश. इट शुड नॉट बी कॉन्स्ट्रूड दैट वे. यू हैव टू मास्टर इंग्लिश एज वेल. उसमें कोई दो राय नहीं. What languages do you speak and how many? No. How many? Your mother tongue is Marathi. My mother tongue is Marathi. Thanks to my stint in ABVP, I could, in a way, have some command over Hindi, and I love Hindi very well. And I have been a postgraduate student of English literature, so English is also something. Why did you study English literature? What was the connection? Being ABVP, English literature, ऐसा कुछ नहीं. आप शेक्सपियर क्यों पढ़ेंगे? I had the passion of going into media. तो ऐसा लगा कि इंग्लिश मीडिया में थोड़ा ज़्यादा वेतन वगैरह मिलता है तो वहाँ जाना चाहिए. Okay, I'm sure by now that mistake has been corrected, that which you had in your mind. I know. But so when you joined the BJP, did you aspire? What did you aspire for, and what inspired you to join the BJP? Well, I mean, in our ideological movement, in a way, things come to you very naturally. I was a Sangha Swayamsevak, then ABVP Karyakarta. I had the occasion of fighting against emergency and then waging satyagraha, participating and being behind the bars for just 45 days in Yerawada in Pune. तो इस अडवाणी जी भी वहीं थे ना? नहीं, अडवाणी जी बेंगलुरु में. बेंगलुरु में, अच्छा. हाँ. मगर पुणे में महाराष्ट्र के काफी नेता थे. हमारे सरसंघ चालक देवरस जी भी वहीं थे. तो वो तो ठीक है, वो तो एक समय का तकाजा होता है. तो उसी क्रम में फिर एबीवीपी में हम आए और काम किया. आई वाज द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ एबीवीपी इन द 80s, एंड देन आई हैड अ ब्रीफ स्टिंट इन मीडिया इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल. And then since 1988, I am with Mahagi Prabodhini. Till 2016, I was the principal functionary as founder, director, and later on director general, as what they say. And now I am the vice chairman of Rambau Mahagi Prabodhini. And what do you feel like when you train young leaders of the country? What is that? What promotes you, or what is the inspiration to bring out these young leaders? What do you want to do? If I only talk about the current generation, which we normally refer to as Gen Z, तो
एक तो ऐसा है कि इन द यंग जनरेशन now there is a deeper understanding of the fact that you cannot go just like that in politics. If you go with some training, then you can make a big impact. That realization is there, which was not there earlier. I'm sure you must have come across a poem which Advani ji used to say. He used to quote him. शैल चतुर्वेदी जी की एक कविता है, और वो उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना अधिवेशन हुआ कार सरकार वाला। हाँ बताइए, पर फिर भी बताइए। हाँ। नए नए मंत्री बने एक सज्जन जब पहली बार सरकारी कार में बैठे, तब उन्होंने ड्राइवर को कहा कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो ड्राइवर बेचारा डर का मारा बोला, मैं हुजूर मैं तो उतर जाऊंगा। मंत्री जी ने पूछा भला क्यों? तो ड्राइवर ने कहा क्योंकि महोदय ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल सकती है। तो सरकार Advani ji would say this and then smile. Yeah, आप yeah. समझे कि नहीं? He had a unique style, or has a unique style of narrating. And he was so lovable. Yeah. Even a small कार्यकर्ता like me, he always used to inquire, कैसे हो विनय? मतलब these are the things which touch your heart. Both he and his wife, Yeah, Kamala of ji. course. I have once, I remember I was sitting there and suddenly Advani ji walked in, and you know the way he would tell Kamala, 15 लोग हैं आज भोजन पे, and I was like 7 बज चुके हैं, 15 लोग भोजन पे आप कहाँ से ले? So she said घबराना नहीं है, अपने आप हो जाता है She यहाँ was पे। accustomed to all these things. Yeah, because that is, I guess, the culture of the RSS also, कि जो भी आया, जो भी घर में बना, वो आप मिलजुल के खाइए। मतलब खिचड़ी, ऑफ कोर्स ही ऑलवेज एट सात्विक भोजन, वो ज़्यादा नहीं खाते थे, वो थोड़ा ही खाते हैं अभी भी। ही इज़ वेरी स्मॉल ईटर, यू नो, ही डजंट ईट मच. But yes, like so I was coming saying, back to Gen Z, I would say that they are curious about their own capacity building. They have realized the importance of it, and they come in good number. These days, policy research has become a craze. Everybody wants to study public policy as what they call. God knows where exactly are these people going to land themselves. think tanks. Yeah, I don't know, but we don't have so many think tanks. जी. And whether these think tanks are really contributing is also a matter to be investigated. So, but there is a lot of, I'm seeing a lot of young professionals who studied this, who in corporate sector, it is encouraged because people now want people, workers who are more, what should I say, sensitive to understanding that it's not just numbers which matter. It's what you contribute to society also. So, you were saying, sir. That is true, but then I would also say that some kind of gravitas and some profoundness to their learning is something which is in short supply. Do you feel that social media is a deterrent, or is something that young leaders of tomorrow should embrace? No, they have to embrace, because that is the way to communicate. See, as I said, to be good is not enough. You have to appear to be good, which means that you have to appear, first of all. And where would you appear? The platforms are there for you to appear. And how to appear effectively, that depends upon the skills that you have acquired. So, certainly social media you just cannot ignore. But social media is a tool for you to use, not you are to be used by the social media. Okay. तो इसका थोड़ा आकलन बनना बहुत जरूरी है। और ये डेंजर्स हैं आज की सोसाइटी में। निश्चित रूप में है। सोशल मीडिया की धारा में हमने प्रवाह पतित होकर बह जाने की जरूरत नहीं है। उस पर इस तरीके से कमांड हमने प्राप्त करनी चाहिए कि वो हम जो चाहे उस पद्धति से उसके अंदर एक नैरेटिव बनाने की क्षमता निर्माण होगी। अगर मैं 2024 की बात करूं, what are your prospects? What do you imagine is going to happen with the BJP? How many seats? Is it going to be a clean sweep? What are the challenges before the BJP for 2024? Well, BJP has, made it very clear that we take every election as a challenge. हम बहुत सीरियसली चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव को हम चुनौती मानते ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चुनौती तो है, चुनौती हो भी सकती है, मतलब तरह तरह की चुनौतियाँ समय समय पर आती है, क्षेत्र में आती हैं। बट एक अगर मैं फ़र्क जो मुझे प्रतीत हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ, उसको अगर बताऊँ तो 2014 was all about rejection of Congress.
2019 was about continuation of BJP government because it was working well, rising to the expectations, and people were all in support of Prime Minister Modi. Today, people have realized that for their own interest, they have to have BJP back into the power. Because those who were school-going kids in 2013, 2014, today are grown-ups. They have seen how the government has added value and made their lives rather easier than what they what were the lives of their parents for that matter. इसके कारण इस सरकार ने जो वैल्यू एडिशन किया है, इसका अनुभव ली हुई पीढ़ी अब वोटिंग करेगी. तो इस पीढ़ी को तो मतलब दे डोंट रिक्वायर टू बी कन्विंस्ड, and therefore for their own sake, see, this is the aspirational generation, and to shape their aspirations and to take them to a different level, they require a strong government, a decisive government, and they know that only Prime Minister Modi can give this kind of a government. And yet there are many people in India who feel that the 10 years of the Modi government has probably fragmented and polarized the country to a large extent. Would you speak to that, or would you ignore that section of Indians? No, see, polarization is only because of a certain amount of ideological untouchability and a personal anathema towards Prime Minister Modi, that they have imagined that it is there. ऐसा नहीं है. आइडियोलॉजिकल अनटचेबिलिटी के तो हम बरसों से शिकार होते रहे. अब हम सत्ता में आए तो उन्होंने अपने स्वर अधिक बुलंद किए और तरह तरह की गालियाँ, अभद्रता और आरोप हमारे ऊपर चिपकाने की कोशिशें की गई. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को अब पता है कि वो क्या है और हम क्या है. और इसलिए मुझे लगता है कि द वर्डिक्ट इज गोइंग टू बी वेरी क्लियर. पीपल वांट दिस गवर्नमेंट टू कंटिन्यू, and therefore Prime Minister Modi will certainly roam home. Another question I want to ask is, the whispers in the corridors these days is that अगर 2024 में मोदी जी फिर से आते हैं, उसका मतलब है 5 साल और बीजेपी, मतलब 15 साल बीजेपी की सरकार. After 10 years, there are going to be monumental changes in everything, in every sphere of life. क्योंकि first 5 years, Modi ji was finding his way probably in Delhi and did not cause many changes. The next 5 years saw phenomenal changes also. If I was to list it, there are many changes which have happened. And the political fabric of the country also changed in the next, and there's consolidation which happened. The 15th part of the thing, which is like 10 to 15 years, means legacy building, which means a lot of changes, and the way India was will change. Do you hear that, those murmurs also? Well, change is all around. I mean, the way we were preparing for elections in 2013, 2014, early 2014, and then in 19 again, and then again in 23, 24, of course there is a change. इसमें कोई दो राय नहीं. तो मतलब उस समय तो पीपीटीज का बड़ा बोलबाला था ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बॉयज कहते थे. अब तो रील बॉयज हो गए सारे. अब तो उतना भी समय नहीं है किसी के पास. अब तो रील इज बिकमिंग अ टूल टू शेप द नैरेटिव, वेदर यू लाइक इट और नॉट. दैट इज द फैक्ट. तो समय, और somebody called this that we are living in an attention economy. No, sir, what I meant was that in the second tenure of Modi ji, जैसे कर्तव्य पथ बना दिया, पार्लियामेंट बिल्डिंग अलग बना दिया, मंदिर बनने वाला है, Varanasi has changed. There are so many changes. If I was to go from north to south, from Kashmir onwards, things have changed. And similarly if he wins 2024, there will be police reforms, administrative reforms, educational reforms, and reforms where the way we knew things is going to completely change. If you speak to Kashmiris, the way Kashmir was before the abrogation and then after, it's a different Kashmir altogether, right? Similarly, even in Varanasi, you will see, similarly in many parts of the country, in the northeast, which we have seen. Now, do you see that there is an ambition, there is a goal? Is there something that your party is working for a transformational change in India?
Yeah, of course, as what Prime Minister has very rightly, in a way, summarized in his Pancha Prana, that believe that you are a developed country, don't be in the मानसिकता of a developing country. तो एक थिंकिंग बिग का एक संस्कार है, एक दृष्टि से मैं मानता हूँ कि उनके द्वारा जो दिया गया है. Not be embarrassed or shy to think big. That is what I'm saying. At the same time, he has been saying that do away with all the shreds of colonial hangover that we may have. पूरे तरीके से मुक्त हो जाइए जो उपनिवेश की मानसिकता थी उससे. ये सारी चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारी बातें हैं उसमें. तो ये जो उन्होंने एक दिशा हमें दिखाई है, मैं मानता हूँ वो पूरा देश उस दिशा को पकड़कर आगे बढ़ने की स्थिति में निश्चित रूप में है और उसके कई आसार हमें दिखाई देते तो हैं. वो ब्लूप्रिंट सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, इट्स फॉर Not द at all. कंट्री. It's for the entire country, which is why he chose the occasion of Independence Day address while sharing his Pancha Prana. And he is, on the one hand, very philosophical. On the other hand, he is very practical as well. कई विषयों में, मतलब मैं उनके भाषणों को अगर थोड़ा तराशता हूँ तो दिखता है कि इतनी प्रैक्टिकल बातें उन्होंने बताई है. जैसे उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि उन घर के माता पिताओं ने अपने बेटी के साथ बेटे को भी पूछना चाहिए कि इतनी देर रात कर क्या रहा था. सो देयर हैज टू बी अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेल चिल्ड्रन एज वेल, विच इज अ सटल मैसेज टुवर्ड्स जेंडर जस्टिस, इज इट नॉट? यस. तो ये जो बातें हैं, मैं मानता हूं कि ये एक नई जमाने की नई सोच है, विच इज व्हाई ही कॉल्स इट अ न्यू इंडिया. Right. And the new India is there on the horizon, and 2024 will further expedite the process of. And in this new India, what Transformation. role do you see for yourself? Well, I am a कार्यकर्ता, so whatever the higher ups decide, we will play that role. Right. All the best, sir. Thank you Thank so you. much for being part of the podcast. Dhanyawad. Thank you so much. Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.